We are going to study radiation of electromagnetic waves. So we are going to now come to the radiation of electromagnetic waves. So we have been studying E fields and B fields in terms of components, and how we redefine E fields and B fields in 4 vector notation. And we defined E and B fields in terms of scalar and vector potential phi and A, and our redefined notions of 4 vector notation, which include not only velocities at lower velocities but at higher velocities. अब जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ते हैं, हम बेसिकली क्या करते हैं? हाउ डू स्टडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? इट्स बेसिकली E fields and B fields, they are oscillating perpendicular to each other. कोई भी चार्ज अगर रेडिएट कर रहा है, जैसे कोई चार्ज एक रेस्ट है, इट्स ओनली E fields, but if it's in motion, so it will have B fields also. So E fields and B fields का ये components perpendicular direction में होंगे, that will give result of electromagnetic radiation. ठीक है? Now we have studied radiation of electromagnetic waves. If you try to study electromagnetic waves basically as components of E fields and oscillating E fields and B fields, and with our redefined notions of 4 vector notations and redefinition of potential in terms of scalar potential phi and vector potential A. ठीक है? यहाँ तक है. And our recent foray means our recent जो हम किया हमने enter in the language of retarded potential. हमने कोई चार्ज लिया, उसकी फॉरवर्ड वेव ली और उसकी बैकवर्ड वेव ली. ठीक है? बैकवर्ड वेव में अगर कोई चार्ज है, इट इज कमिंग टुवर्ड्स द सोर्स. ठीक है? उसका क्या कंट्रीब्यूशन है? ये सब कुछ लेके we are going to study this radiation of electromagnetic waves. यहाँ तक ठीक है ना? So this much is your brief format. तो अगर ये है ये चाहिए नहीं आता हाँ IG पर कितना IG फिर हाँ मुझे 8 my So this is this much. So now what we are going to study is that we use the original coordinate O. Coordinate will be O, and any interior of the system of charge. And as usual charge हमारे पास है, it will be rho B. And R naught, if it's exactly at center, so we can take it. And R naught is greater than R. So हमने center पे retarded potential from the center. R naught. And further, R can be equal to R naught minus R, or it's approximately equal to R minus R dot 1. ये R dot n का मतलब क्या है? R dot n means जो field है ना, field. So इसका component, whether it's E field or B field, इसका component with the origin vector क्या है? It will be maximum and R dot n is equal to cos of 0, है ना? And it will be minimum and it will be 0. So the orientation of this vector with respect to the source field, so that will represent this R dot n. So we will accordingly be the way कितना दूर होगे source के साथ, we can accordingly adjust this. अब हम काम करेंगे what we are going to create. If you remember equation, we supposed to these formulas equation 62.9. So we are coming back to our definitions of retarded potentials. For some back value is 62.9 है, 62.9. If you remember, I have studied phi का हमने define किया था, rho t minus r base. ये हो गया चार्ज डेंसिटी के लिए. These are the boundary conditions. ठीक है? Final. And this is for what? This is for R phi and this is for
E ये स्केलर फैक्टर पोटेंशियल के लिए एक टर्म है, एक किसके लिए वेक्टर पोटेंशियल। इसमें हमने कहा था ना जो A है इट विल कॉरस्पॉन्ड टू द चार्ज करंट डेंसिटी के लिए, एंड दिस इज फॉर चार्ज डेंसिटी। करंट डेंसिटी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है सर्कुलर लाइंस ऑफ कोर्स, बिकॉज़ व्हेन देयर इज अ करंट हो रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, एंड मैग्नेटिक फील्ड को हम इन टर्म्स ऑफ A रिप्रेजेंट करेंगे, एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जिस फाई है इसका ये है फाई नॉट ये टर्म्स में। So basically field is produced due to charge density rho and current density this rho G minus r, ये field density है, ये charge density है, ये current density, इसकी इन दोनों की वजह से field produce होता है, जिसकी वजह से electric and E fields and D fields produce होते हैं, and in this context we are studying electromagnetic waves produce होते हैं. So we are going to have our definition of how we define retarded potentials. इसको हम just see how electromagnetic waves are also created. So अगर आप ऐसे देखें हम definition को quantities rho and change during time or dot n by c, जो है ना फील्ड की वजह से उसका जो रेडियल वेक्टर है that is this thing और डॉट n और डॉट जो ऑरिजिन जहाँ से सोर्स जो चार्ज होता है, ठीक है, तो उसका रेडियल वेक्टर उसकी ओरिएंटेशन क्या है, सो ऐसे तो अब ये है कि अब फाई है, फाई को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, फाई को अगर हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो अब ये क्या है, अब देयर इज एन आर्गुमेंट हियर, आर्गुमेंट ये इज दिस की we can in the argument we can neglect यहाँ और है, और की वजह से we are basically r is equal to r naught minus r approximately. What he said that we can so we can sometimes neglect this values of r dot. इसको हम sometimes basically we are taking this definition, ये r नहीं है, ये r नहीं है, ये r minus r naught, ठीक है, r minus r naught means what, जब हम बोलेंगे ना चार्ज यहाँ पर चार्ज है तो सब चीज बोल सकती है, जैसे रिटार्डेड वेव, ये हो गया इसका फॉरवर्ड वेव कंट्रीब्यूशन, रिटार्डेड वेव में वी आर सेइंग है e प्राइम प्लस e बाई, ये कितना आ रहा है, दैट्स वेव वी स्टडी। अब ये क्या है कि डिनोमिनेटर में ये r minus r naught है ना, वी कैन नेग्लेक्ट इट, वी कैन ओनली रिप्लेस इट बाय r. So if it इसको phi का वैल्यू जो होगा, we can this r को रिप्लेस कर सकते हैं और some approximation. तो r naught into here. So but in numerator we cannot do the same. We cannot just neglect this value of this thing, r naught by c plus r dot n by c. The r है basically this, r is also this. It's also how the charge में जो है इसकी orientation, अगर ये सीधे जा रहा है ऐसे तो r dot n is equal to maximum. Its cos of 0 is equal to 1. अब इसकी चार्ज ऐसे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, that will be given by this factor r dot n का factor. Denominator में we could just neglect it, but in numerator इसकी जो explicit dependence on time है we are not going to neglect it, because charge density वो है, ये है, is dependent on this, so this is all. And the same way A है, A can again be represented by so this is by r naught को बाहर निकाला, because r naught is sort of constant, so it will come outside to integration. Integration में अंदर वही चीज रहता है जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन होगा, है ना, which you have studied. So we can take it outside. So in the same way this is charge density, and now the other part of solution which is related with A, it is
इसकी वजह से बी फील्ड प्रोड्यूस होता है, इसकी वजह से ई फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो ये है प्लस आर डॉट एन बाई सी डी। यहाँ तक तो ठीक है, इसमें जस्ट फाइंड। So at sufficiently large distance from the field over small. So again, at sufficiently large distance from the system, the field over small region of screen can be considered as plane. We can for small distances, this solution, which is the sum of phi and a, it is basically solution of what it can be considered as a sort of plane. So rope में है ना, rope पे करते हैं ना, if you just plug it somewhere in between, तो there will be a sort of disturbance, एक यहाँ से जाएगा, एक यहाँ से जाएगा। अब इसी तरह कोई source charge, ठीक है, उस source charge की वजह से if the source charge is at rest, तो E field होगा, और क्योंकि current density भी है, तो sort of ripple, which the ripple is that of electromagnetic wave will get created, ठीक है, उसी को ये कह रहा है small plane wave. So if it's restricted, if the wave is restricted only in one dimension, you can take it as a plane wave. Moreover, this condition, जो E field and B fields are perpendicular to that each other, मगर restrict करेंगे एक ही plane में, ठीक है? और unit vector n होगा perpendicular to both E and B, वही है E cross E. अब ये है कि we will come to जो हमने वेक्टर पोटेंशियल पढ़ा था जो पॉइंटिंग वेक्टर है ना, पॉइंटिंग वेक्टर कैसे हमने पढ़ा था एरियल क्रॉस क्या E क्रॉस H है ना, बेसिकली S देगा, S is E cross. Sometimes जो H है, H is also 1 by epsilon naught E है ना. So you can also write it as pointing vector as E square, है ना? So this जो understanding of pointing vector है, अब यहाँ E is equal to H cross N and H is curl of E. Basically आपने ऐसे पढ़ा था, B is equal to del cross E, है ना? Since we are redefining it in terms of this potential, in terms of जो हमारा redefinition है ना, जो हमारा ये है core vector notation, वहाँ आप vector notation में B को del cross E, so this is basically E and it's H two. So in plane wave, we have H is equal to 1 by C E naught cross. So here dot indicates differentiation with respect to time. अब वही है, अब H है this, H is equal to 1 by C E naught cross of N, और E जो होगा, E है ना, H E also is ठीक है, so you can further write E in terms of this H, so you can write it as A naught cross of N cross of N, okay. E go in terms of H further assemblies. So this is how we redefine H and E in terms of redefinition of A and this. अब सिर्फ फर्क देखो क्या है, यहाँ A cross N है ना, this is magnetic field. जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, it's A cross N cross of N, है ना, it's further A cross O. So that will give the orientation in the perpendicular direction. ठीक है, वो ये E field and B field का orientation का सिर्फ फर्क यही है, it's perpendicular to each other. That's why cross product is there. ठीक है, so that's in the अब ये further what we are going to do, we know that the field at distance is inversely proportional to the first power distance achieved. We also know the time and the expression 66.1 t. अभी क्या है, जो टाइम यहाँ पर एक्सप्रेशन में आ रहा है, तो एक टाइम है नॉर्मल टाइम, बट यहाँ जो टाइम है ना, टाइम कम्स एज लाइक दिस, जैसे गैन में टाइम क्या है ना, x is equal to x prime plus dt, है ना, इसमें t is equal to t prime या t by ये आएगा b, है ना, और t by
हाँ आर बाई सी टी माइनस आर बाई सी या टी प्लस आर बाई सी आएगा, आर बाई सी आएगा और फॉरवर्ड में टी माइनस आर बाई सी इज इक्वल टू बेसिकली टी ही है. It is you are doing some event at time t and you are event doing some event which has happened sometime before that time t to subtraction आएगा. अगर after होगा तो वहाँ मतलब मैं कहता हूँ वहाँ कोई बंदा है 5 मिनट पहले ही यहाँ था. So अगर वहाँ 5 मिनट था तो यहाँ we started minute 2 I have to subtract 5 minutes 2. So यहाँ ये 3 मिनट पहले था, ठीक है? In the same. So if it's like that, तो जो हमारी potential है, जो retarded potential की form में, if we want to write the formula 63.5 हमारा ये 63.5, हाँ 63.5. तो this we have said when we studied these two things, we also if you remember. हमने परसों वाले क्लास में we try to study Lagrangian for second order जो जब हमने वो किया था दार्विन निकाली थी second order Lagrangian किया था. वहाँ पे वो and see how we define C and so this will come as a handy. So this is main here you should always come back and forth. So we use concepts and ideas back and forth, okay? So, but at every step, your job is to convince yourself that how he goes from step A to step B. With some partial understanding of some previous concepts you have already studied. But इस वक्त आपको अभिजय for example याद नहीं होगा. So once we go to this thing, so we are going to substitute here. So from our redefined जो हमारी A and 5 है, इसको हमने redefine किया in terms of this orientation of field regarding this और जो हमारी definition to find A, ये denominator में 1 contribute but contribute किया, so we can write A को हम लिख सकते हैं write A we can write as there are three primes here. A is this E by C R minus. अब यहाँ V dot R के बदले में लिखा क्या? M dot B. So this is the thing we have seen. So जो है ना वो जो orientation और the E and B field वो यहाँ से ये हमने लिखा है R के B और R के बदले हमने लिखा है M dot B. And R dot को हमने बाहर निकाला. That's only possible when it's also R naught and it's also R naught. So ये 1 minus B dot ये R and dot B you can see. If you do it where T जो है T prime minus R naught T by C dot of N is equal to T minus R. This is the solution. So the radiated electromagnetic wave carries of energy. Carries of energy. कैसे energy carry करता है? Energy flux is given by C h square by 4 pi n. और h square कैसे स्थित है? ये है ना E cross h. E को भी लिखो in terms of h. क्या आएगा? E is equal to 1 by epsilon naught h. तो वहाँ h square आएगा. तो वो h square ये आएगा 4 pi denominator. You can also write S in terms of this thing. So if you write it like this and further, अगर आप जाओगे definition of point vector में ग्रिफ्थ पे जाओ या इस बुक में भी है, but those chapters are
This 5 and 6. We have done from first 1 to 4, 5 and 6. Now if you go to Griffith, तो वहाँ आप देखना so how कोई भी closed charge होगा, negative charge होगा closed system में, ठीक है? Net contribution क्या आएगा E cross B? तो there what we do in the calculation is we take a solid angle मान लेते हैं, कोई भी spherical surface लेंगे, उसका solid angle लेंगे, तो 4 pi r square phi, फिर उसको integrate करेंगे through the whole volume, ठीक है? And doing that exercise, that will give us intensity of that field, which is basically the motion of charge E fields and B fields, which are basically produced by phi and A. These two sources. The charge density and the current density. So I'll just, this is a calculation we will do. It was, so intensity will be equal to CH square by 4 pi R naught square dO. Where dO is the solid angle. वहाँ आपको बीच में ऐसे लिखा होगा dO solid angle ऐसे. और square it comes out to 4 pi R square. तो उसका आप देखना इंटीग्रेशन कैसे करते हैं. उसी में अगर चार्ज इज कंटेन्ड समवन इनसाइड E फ्लक्स E क्रॉस B वो कितना निकलेगा फ्रॉम ए क्लोज सरफेस, ठीक है? तो दैट विल गिव you by this intensity of the charge from this this is of course the energy radiated function splits out the velocity c surrounds space not accumulating or dissipating anywhere. दूसरा हम कह रहे हैं हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में क्या कह रहे थे? डेल डॉट E इज इक्वल टू चार्ज, है ना? चार्ज डजंट कम आउट ऑफ नोन, जितना अगर अंदर से कोई निकल रहा है वो बाहर जाता है, अगर बाहर से जाएगा अंदर आएगा. इस तरह फ्लक्स, so electromagnetic energy अगर डिसिपेट हो रही है फ्रॉम कंजर्व सिस्टम से, so it comes at the expense of that system से कुछ चीज कम हो रहा है, ठीक है? E field and B field जो भी सिस्टम होगा कंजर्व होगा, जहाँ से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट होती हैं, that will come at the expense of that कंजर्वेटिव सिस्टम. इसमें E field से B field से होगा, so जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन होगा वो उससे सब्ट्रैक्ट दैट कंट्रीब्यूशन. If you remember जो पॉइंटिंग वेक्टर की है ना ये टर्म्स, 2-3 टर्म्स आती हैं, लास्ट वाली टर्म ऐसे आती है माइनस ऑन द एप्सिलॉन E क्रॉस B. So this comes, इसका साइन माइनस है. The rest of the terms आती है तो that is the conserved system of the charges. इसका माइनस इसलिए आ रहा है कि ये it is something which dissipates the system से बाहर निकल रहा है, closed system. So in the same way अगर ये चार्ज सिस्टम है closed system में रिटर्न पोटेंशियल लेंगे कितना निकल रहा है बाहर, so it will come out. अब ये है कि वो क्या है, energy radiating from the system spreads out with velocity c into surrounding space, not accumulating or dissipating anywhere. This is what he said. Okay, so उसमें ये कि again it reaffirms our belief in conservation systems. Conservation systems क्या है? Mass of the universe is conserved, mass of the total mass. Is it the charge in the system is conserved? ये होगी local definition of charge. दूसरा होगी global definition. पूरी कायनात में net charge जो है वो constant. एक होगा local. In a closed system we can see कि net charge जो होगा वो conserved होगा. अगर system से कुछ चीज निकला वो उसमें कुछ बहुत कम हो गया. So अगर electromagnetic वहाँ से निकले, waves निकले, it came at the expense of E and B. वो बोर्ड हमको subtract करना चाहिए. अब इसी चीज को हम so वो ये equilibrium. अब इसी चीज को अब further हम will try to get rid of. So now we are going to redefine things in terms of Fourier potential. So जिस तरह हमने कहा था ना last time if you remember, हमने इस तरह एक्सप्रेशन को ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, है ना? There is another way of writing waves in as a contribution of Fourier waves. Fourier space में जाता है, ठीक है? Sum of sine waves and
कोसाइन इस वेव का इंटीग्रल। जैसे कोई भी वेव होगी ना ऐसी ऐसी होगी, जैसे आप पढ़ रहे हैं आप भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सॉ टूथ वेव, कोसाइन वेव, साइन वेव, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इन टर्म्स ऑफ पल्सेस निकल रही है, वी हैव टू सी उनका सबका कंट्रीब्यूशन निकल रहा है। सो आवर नेचुरल रिकोर्स इज गोइंग टू फूरियर स्पेस, ठीक है। फूरियर स्पेस एक मैथमेटिकल एनालिसिस टूल है वेयर वी कैन स्टडी द एनालिसिस ऑफ वेव्स और वेवलेट्स, ठीक है, फूरियर वेवलेट्स। सो वी आर गोइंग टू जो हम ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एनालिसिस है हाउ कैन इंटीग्रेट, अब वही है। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है इससे ये वाला कंट्रीब्यूशन और दिस कंट्रीब्यूशन, और ए को भी हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ दिस फूरियर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर पोटेंशियल, फूरियर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर पोटेंशियल। सो इन ए वे दिस सब्जेक्ट इज इंटरेस्टिंग ऑफ ये यू हैव टू सी कि जो हम नेचर में है ना, ये लाइट है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सन की लाइट है। सो यू आर स्टडीइंग समथिंग वेरी रियल, बट द थिंग इज दैट इसकी जो खूबसूरती है, इसकी जो अच्छा चीज़ है कि आप इसको समझ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बुक्स, इन टर्म्स ऑफ इक्वेशंस। फिर यही चीज़ हो भी रहा है नेचर में। ये जो लाइट है ना, बल्ब की लाइट, ये भी है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सन की वेव है। सो यू हैव टू सी इट, यू आर स्टडीइंग दैट थिंग बेसिकली, एंड दोज वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ई एंड बी फील्ड्स। आप देखो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहाँ है, जिसकी यार ई चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, आपकी आंखों की रोशनी भी यही है बेसिकली, मॉलिक्यूल्स उनकी एक्साइटेशन होती है, ठीक है, वहाँ से फोटॉन आता है या फील्ड आता है। वी आर स्टडीइंग क्लासिकल फील्ड्स, चलो ठीक है, नॉट बोल उसी में आता है वो रेडिएशन प्रेशर, उनके तो कैलकुलेट द रेडिएशन प्रेशर, वहाँ से लाइट आती है, इसने इसको कितना धक्का दिया इस फॉर्मूला से। ये ना माइन्यूट इफेक्ट है ना, इफ यू डू फोटोग्राफी में देखो छोटी छोटी प्रॉब्लम है, कैलकुलेट द रेडिएशन प्रेशर, वो बहुत कम है बट वी आर एबल टू कैलकुलेट इट, ठीक है, गॉट द पॉइंट। सो although it might drive abstract, but the thing is we are dealing with something नेचर में, किसी चीज के साथ हम डील कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। उसका अपना लॉजिक एक है, किसी भी चीज को पढ़ने का एक होता नहीं, I need not know it, but वो होता नहीं, you should not be bored by the dryness of equation. Something is happening here, कोई चीज हो रही है, something deeper. You should have that thing. Okay? This is how we symbolize it by equations, okay, by formulas. But you are representing something very real. वो real क्या है? Electromagnetic waves. So अब ये है किसी चीज को हम फूरियर वेव में डिकम्पोज कर देंगे. So it's like this. तो अगर एक पोटेंशियल है, you can also write it as G omega E dot R. ये है जिसमें e to the power iota x, ये cos of x minus iota sin x. वहाँ cos वेव भी आ गई, sin वेव भी आ गई. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जो cos और sin वेव्स, उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? इन ए गिवन वॉल्यूम क्या है? फॉर ए गिवन वेक्टर पोटेंशियल क्या है? ठीक है, दिस इज व्हाट इज से. एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है x ओमेगा, वो इन टर्म्स ऑफ we can also write it like this, and the field we can also write it like E cross E omega. अब ये है कि when speaking of the spectral distribution of the intensity radiation, we must distinguish between Fourier X series and Fourier integral. ठीक है, थोड़ा सा you have a look over what are Fourier series and Fourier integral. Fourier integral means sum, but sum किसकी कर रही है? Fourier series अंदर क्या हो रहा है? इतना है ना कि d इस वॉल्यूम में कोई चीज ये Fourier वेव इसी का sum, but that is being integrated. Total contribution क्या? ठीक है, so that's what we say. Fourier series और Fourier integral में आपको ये होनी चाहिए, premise होनी चाहिए. Fourier integral किसको कहेंगे? Fourier sum कैसे होगा? Physics students. Because
इसमें ये है कि फोरियर सीरीज अपने आप में बहुत बड़ा, इस पर किताब है वेव इलेक्ट्रिक मैथमेटिक्स में बहुत बड़ा ब्रांच ही है वेव इलेक्ट्रिक फोरियर सीरीज, हाउ टू सम दीज वेव्स। अब एनर्जी है, देखो हम प्लेस, अब ये एनर्जी कैसे लिखी है, एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वो है केस ऑफ 66.6। हाँ, जो इंटेंसिटी हमने ऐसे लिखा था ना, ऐसे इंटेंसिटी हमने लिखा था CL² 4π² 4πr0 डबल सॉलिड में इनको डिकम्पोजिंग। अब इसी चीज को अगर हम एनर्जी लिखेंगे, we can also write it as H ओमेगा इस बोले H ओमेगा स्क्वायर, ये R0 स्क्वायर अपना है, ये भी वो अपना है। टोटल इंस्टेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं और H को ऐसे लिख सकते हैं। अब now this how he has in the subsequent steps he has shown how to हमने यहाँ पर लिखा था go to this thing। इसमें है spectral resolution of retarded potential, वहाँ आप जाओ spectral resolution of, वहाँ हमने फोरियर वेव को कैसे A and phi को कैसे इन टर्म्स ऑफ हमने फोरियर वेव एज ए फोरियर को एज ए व्हाट ऑफ फोरियर इंटीग्रल, वहाँ पर जो हमें नॉलेज है दैट वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट हियर, phi A को हमने कैसे लिखा, सो वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट हियर। तो अगर हम पहले कंट्रीब्यूशन ड्यू टू J for Fourier integral expansion for J is current density minus infinity to plus infinity। अब ये चीजें फ्रॉम कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, तो अब ये उसी में हिसाब से करंट डेंसिटी और A ओमेगा का हम ऐसे लेंगे, E रोटा KR0 by CR0। So going there, going this to this section, वहाँ इसकी फॉर्मूला नहीं है, सब those formulas here। Want to know this fact? अगर याद आपको वहाँ पे B मिला है, बस you just see it at your place on that। अब ये at the end what he is trying to say, H को in terms of E cross H E cross 1 by C0 E cross B है ना, ऐसे कुछ E को in terms of H लिखेंगे, तो it will come out to be या H को in terms of E लिखेंगे, तो H का फॉर्म आएगा ऐसे, H का फॉर्म आएगा ऐसे, का ओमेगा आई का की R0, ये एक बार आएगा डिफरेंशिएशन तो C आएगा, दूसरी बार आएगा तो C स्क्वायर आएगा, माइनस की R0 and if you change here, if the charge carries out a periodic motion in a closed trajectory, the field must be expanded in Fourier series। अब क्या कह रहा है, charge carries out a periodic motion in a closed trajectory। Closed trajectory means charge is moving, but in a, so then the field must be expanded in Fourier series। अगर ये closed trajectory में नहीं मूव कर रहा है तो Fourier series लग सकती है या नहीं, ठीक है, we postpone that question, ठीक है। so इस पर emphasize किया है। So the components of Fourier series expansion को अब वो इस इंटीग्रल को हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे, इस इंटीग्रल को कैसे इवैल्यूएट करेंगे, इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना ऐसा ही हो गया एज इफ वी आर कंप्यूटिंग द मोशन ऑफ चार्ज इन अ क्लोज सरफेस, ठीक है, कैसे विद द हेल्प ऑफ विद रिकोर्स टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन ऑफ फोरियर डिकम्पोजिशन, कैसे करेंगे फोरियर वेव, दिस इज व्हाट तो एट द एंड जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा हमारे पास विद द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ओमेगा के बदले हम ओमेगा नॉट, इसको हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ
2 pi by t, है ना, ओमेगा is basically 2 pi by t, इसको in terms of time period लिखेंगे, frequency को in terms of time period लिखेंगे. If you write, if you do these substitutions, तो जो इसका वैल्यू आएगा k r naught c square e square r naught. This is closed interval. It was iota and omega naught e minus k naught and cross dr will give the direction of this field. Okay. And is basically and वो velocity जो retarded potential के साथ उसका ये orientation क्या है? It will be perpendicular to that and cross dr. This is the जो इसका Fourier e. इसको cos wave भी आएगा, sine wave भी आएगा. These are the constants which came outside the integration. These are not variables in the integration. इसमें लिखना आपको क्या इंटीग्रेट करना है, कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से क्लोज इंटीग्रल, ठीक है? कौन सी चीज जो वैरी कर रही है, कौन सी चीज जो इनसाइड दैट क्लोज इंटीग्रल, ठीक है, एट डिफरेंट पॉइंट्स with regard to E fields and B fields, ठीक है? तो this was our brief start how we can study radiation of electromagnetic waves. अब इसमें आपने एक काम आप करना, ये the subsequent problem, find the 4-dimensional expression of spectral resolution of 4 momentum radiated by a charge moving along it. अब 4 momentum की जो हमने ली है ना फॉर्मूले, उसके लेते हुए ये कह रहा है कि एक्सप्रेशन निकालो उसका स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन. इट्स अ सॉल्व प्रॉब्लम, एटलीस्ट यू रीड इट, ठीक है? पूछना है, पूछना है तो आस्क. चलो.